Airlines, Car Time and Concorde Travels. हेलो एंड वेलकम, मैं हूं सोफिया जमाल और आप देख रहे हैं टीवी ह्यूस्टन। सबसे पहले हेडलाइंस। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो का कहना है कि प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते हैं कि कॉम्बैट फोर्सेस को रिड्यूस कर दिया जाए अफगानिस्तान में नेक्स्ट यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन तक। ट्रंप ने रिन्यू किए अपने अटैक्स प्रोमिनेंट ब्लैक यूएस लॉ मेकर पर जिनका ताल्लुक बाल्टीमोर से है और उनके साथ स्लैम किया है ब्लैक सिविल राइट्स एक्टिविस्ट रेवरेंड एल शार्पटन को भी। रेशियल इश्यूज एक्सपेक्टेड हैं कि लेंगे प्रोमिनेंट रोल डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंशियल डिबेट्स में, जो कि होने वाली हैं आज और कल के दिन। कैलिफोर्निया टीनेजर को आइडेंटिफाई कर लिया पुलिस ने, जो कि गनमैन था कैलिफोर्निया के गार्लिक फेस्टिवल का। पाकिस्तानी मिलिट्री ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है रावलपिंडी के बहरिया टाउन में आज सुबह, जिसमें मारे गए हैं 17 लोग। हंड्रेड्स ऑफ वॉलंटियर्स ने हेल्प किया रेस्क्यू करना 5 व्हेल्स को, जो कि स्ट्रैंडेड थी फ्लोरिडा बीच पर। और ब्रिटिश वोग ने अब रिलीज किया है स्नीक पीक और बिहाइंड द सीन्स अपने सितंबर इशू ऑफ द मैगजीन्स के। आपने देखी हेडलाइंस, बढ़ते हैं न्यूज की डिटेल्स की तरफ। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो का कहना था कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि कॉम्बैट फोर्सेस को रिड्यूस कर दिया जाए अफगानिस्तान में नेक्स्ट यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन तक। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो का कहना था, इंट्रोड्यूस करवाते हुए टाइमलाइन वॉशिंगटन के प्लान्स के सिलसिले में कट करने के लिए ट्रूप्स का नंबर अफगानिस्तान में, जबकि प्रेसिडेंट ट्रंप की साउथ एशिया स्ट्रैटेजी अनवेल की गई थी अगस्त 2017 में, कॉल देते हुए ओपन एंडेड डिप्लॉयमेंट को ऑफ द यूएस फोर्सेस, इस गोल के साथ कि कंपेल किया जाएगा तालिबान को कि नेगोशिएट करें पीस काबुल गवर्नमेंट के साथ, एंड करने के लिए नियरली 18 साल की वॉर को। और अब डिस्क्लोजर इस टाइमलाइन का एड अप करेगा स्पेक्यूलेशन के प्रेसिडेंट ट्रंप तैयार हैं स्ट्राइक करने के लिए कोई भी डील तालिबान इंसर्जेंसी के साथ, जो कि अलाउ कर देगी एटलीस्ट पार्शियल यूएस विड्रॉल को जब अमेरिकन वोटर्स जाएंगे पोल्स तक, इररिस्पेक्टिव ऑफ कंसर्न्स जो कि मौजूद हैं यूएस बैक गवर्नमेंट के काबुल में। और यह भी याद रहे कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो के ये कमेंट्स आए हैं एक डेलिकेट मोमेंट पर भी, जब यूनाइटेड स्टेट्स तैयारी कर रहा है एंगेज करने के लिए अनदर राउंड टॉक्स तालिबान इंसर्जेंट्स के साथ और डिस्क्लोज करना ट्रंप के गोल को ट्रूप को कम करने के लिए वीकन भी कर सकता है यूएस निगोशिएटिंग पोजीशन, अगर तालिबान बिलीव कर लेते हैं कि ट्रंप चाहते हैं विड्रॉ करना irrespective of the outlines of any deal. That's my directive from the President of the United States. He's been unambiguous. End the endless wars. Draw down, reduce. It won't just be us. Those of you who have served know that resolute support has countries from all across Europe and around the world. We hope that overall the need for combat forces in the region is reduced. All right. So yes, it's not only my expectation, it would be job enhancing. Okay. प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने रिन्यू किए हैं अपने अटैक्स प्रोमिनेंट ब्लैक यूएस लॉ मेकर पर जिनका ताल्लुक है बाल्टीमोर से, और साथ में स्लैम किया है ब्लैक सिविल राइट्स एक्टिविस्ट रेवरेंड एल शार्पटन को भी। इन रिन्यूड अटैक्स के कारण फर्दर फ्यूल हुई हैं रेशियल टेंशंस जब उन्होंने लिंक किए हैं अपने अटैक्स 2020 री-इलेक्शन बिड के दौरान। याद रहे कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने वीकेंड पर डिरोगेटरी रिमार्क्स दिए थे यूएस रिप्रेजेंटेटिव एलाइजा कमिंग्स पर, जो कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के डेमोक्रेट और लॉन्ग टाइम सिविल राइट्स चैंपियन हैं, जिसके बाद डेमोक्रेट्स ने अक्यूज किया रेसिज्म के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप को, जिन चार्जेस को ट्रंप ने डिनाई कर दिया है, जिसके बाद एक बार फिर कल मंडे को ट्रंप ने स्लैम किया कमिंग्स को कि उनके मेजॉरिटी ब्लैक कांग्रेगेशनल डिस्ट्रिक्ट बाल्टीमोर में बढ़ते हुए क्राइम रेट पर, जबकि यहां याद रहे कि कमिंग्स, जो कि वेटरन लेजिस्लेटर और चेयरमैन है हाउस ओवरसाइट एंड रिफॉर्म कमेटी के, ने क्रिटिसाइज किया था ट्रंप की लीडिंग नंबर ऑफ इन्वेस्टिगेशंस, उनके एडमिनिस्ट्रेशन और उनकी हैंडलिंग ऑफ माइग्रेंट्स को, जिसके बाद ट्रंप ने टारगेट किया शार्पटन को, जिन्होंने डिफेंड किया था कमिंग्स को, जो कि कांग्रेसमैन भी हैं उनके डिस्ट्रिक्ट के। ट्रंप ने लिखा ट्विटर पर, जस्ट अ कॉन मैन एट वर्क, जिसके बाद शार्पटन ने वापस जवाब दिया बात करते हुए एक बाल्टीमोर इवेंट के दौरान कल के दिन। यहां पर याद रहे कि 2016 कैंपेन में भी ट्रंप ने बनाया था रेस को फ्रंट और सेंटर, जब डेमोक्रेट्स हैंडल ना कर पाए इस इशू को, जब अब 2020 प्रेसिडेंशियल नॉमिनी सिलेक्ट करना बाकी हैं फ्रॉम नियरली 2 डजन कैंडिडेट्स, जिसमें शामिल हैं सेवरल रेशियल माइनॉरिटी, खासकर औरतें भी। Little did I know that Mr. Trump was going to, on the eve of this, attack the congressmen from this city. And not only the congressmen, but the people of this city in the most bigoted and racist way. He attacks everybody. I know Donald Trump, he's not mature enough to take criticism. He can't help it. He's like a child. Somebody says something, he reacts. He's thin-skinned and not really matured that well. But he has a particular venom for blacks and people of color.
He doesn't refer to any of his other opponents or critics as infested. As for his attacks on me personally, Donald Trump, and I've known each other 25 years. I've marched on him with Central Park 5. I've dealt with him on the Bertha issue. He can say what he wants. Calls me a troublemaker. Yes, I make trouble for bigots. I made trouble for him with Central Park. I made trouble with him for birtherism. I'm going to keep making trouble for bigots. As far as me being a con man, if he really thought I was a con man, he'd be nominating me for his cabinet. Well, you know, America is troubled. And if we say we're colorblind, we need to put on our glasses. We can see. We can see a troubled America, but we can see a blessed America. The employment rates are up in every community, including the black community. The historically black colleges and universities under this president are being blessed. The babies in the womb, the sick and poor and elderly are being blessed. We have an opportunity to continue to be blessed. And we have a president who is listening. And I was glad to pray with him today. Now that's it. God bless you. रेशियल इश्यूज एक्सपेक्टेड हैं कि लेंगे प्रोमिनेंट रोल डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंशियल डिबेट्स में, जो कि होने वाली है आज और कल के दिन, खासकर जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक बार फिर स्टोक किया है रेशियल डिवीजन, रिन्यू करते हुए अपने अटैक्स को ब्लैक यूएस कांग्रेसमैन पर फ्रॉम बॉल्टिमोर, जिनको मिली सपोर्ट कैंपेन ट्रेल पर डेमोक्रेटिक कैंडिडेट कमला हैरिस से, जो कि खुद भी ब्लैक हैं। डिट्रॉइट के फॉक्स थिएटर के बाहर, जहां सेकंड डिबेट इस नॉमिनेटिंग कंटेस्ट की होगी, वोटर्स ने बात की इलेक्शन और प्रेसिडेंट के कमेंट्स के बारे में। जबकि ये भी याद है कि कई कैंडिडेट्स के लिए इस वीक की डिबेट हो सकती है उनका फाइनल चांस देने के लिए प्राइम टाइम पिच अपने मिलियंस ऑफ व्यूअर्स को। जब 20 कैंडिडेट्स डिबेट करेंगे ओवर 2 नाइट, डेमोक्रेटिक पार्टी एम कर रही है रिड्यूस करना नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को नेक्स्ट डिबेट तक, जो कि होगी सितंबर के महीने में। कैंडिडेट्स को जरूरत है 65,000 डोनेशंस की और एटलीस्ट 1% सपोर्ट की इन 3 पोल्स क्वालिफाई करने के लिए फॉर द फर्स्ट 2 राउंड ऑफ 2 डिबेट्स में। मगर थर्ड डिबेट रिक्वायर करेगा 130,000 डोनर्स हिट करते हुए 2% इन पोल्स, जो कि टॉल ऑर्डर होगा कुछ लोगों के लिए जो कि लॉन्ग शॉट कंटेंडर्स हैं। So Baltimore, another iconic American city, and in Elijah Cummings, an incredible American leader who has always been a voice of truth, a voice of reason, has always worked across party lines to find common ground. He is a statesman, and the idea that this president would attack the city of Baltimore and Elijah Cummings is just, you know, and the way he has done it is just a further example of the fact that the guy plays lowball. He, you know, this president, he operates from a very base instinct, and he's actually, I believe, he is doing what he has done from the time he became a candidate, which he is trying to divide this country. He's trying to divide this country. He's trying to say it's us versus them. That is not reflective of a leader. I think President Trump likes to drive the narrative. And suddenly, guess who's talking about the rats in Baltimore? Reuters, CNN. So he's bringing attention to something. I think he cares about the people who live there and doesn't want them to live among rats and vermin. I think a lot, it's going to all come down to compassion and policy. And I think right now, our country is looking very, like, we can't even defend ourselves against the rhetoric, the hate. So I think that they're going to have to show that they're going to be back to what we were, a strong leader in the world, and to mend the fences that have been broken by this administration. कैलिफोर्निया टीनेजर को आइडेंटिफाई किया है पुलिस ने, जो कि गनमैन था कैलिफोर्निया के गार्लिक फेस्टिवल का। याद रहे कि इसमें फूड फेस्टिवल में मारे गए हैं 4 लोग और जख्मी हुए हैं 15, जिसमें 2 बच्चे शामिल हैं, और यह हुआ साउथ ऑफ सैन फ्रांसिस्को में। 19-year-old सेंटिनो विलियम लीगन ने कट थ्रू किया था फेंस से फेस्टिवल के दौरान संडे इवनिंग को, और लोगों को शूट किया था असॉल्ट राइफल से गिलरॉय गार्लिक फेस्टिवल में। गिलरॉय पुलिस चीफ स्कॉट स्मिथी ने बताया था रिपोर्टर्स को कि विद इन अ मिनट ऑफ द ओपनिंग फायर लीगन को फेटली शूट कर दिया था 3 ऑन साइट पुलिस ऑफिसर्स ने, जो कि आर्म थे हैंडगन्स के साथ। जबकि पुलिस डिटरमिन करने की कोशिश कर रही है मोटिव, जबकि यह भी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है अनकन्फर्म रिपोर्ट्स के जरिए बाय आई विटनेसेस के शूटर के साथ कोई दूसरा अकम्प्लिस भी था कि नहीं।
इस शूटिंग में मारे गए हैं 2 बच्चे भी, एक 6 ईयर ओल्ड बॉय और एक 13 साल की बच्ची भी, और एक आदमी इन हिज 20s। जबकि पुलिस चीफ के अनुसार शूटर ने खरीदी थी राइफल लीगली नेवाडा में ऑन जुलाई द 9th। जबकि 15 लोग घायल हुए हैं, मगर अनक्लियर है कि कितने जख्मी हुए हैं स्टैम्पीड के कारण, जब लोग कोशिश कर रहे थे भागने की इधर उधर। जबकि शूटर लीगर ने पोस्ट की थी फोटोग्राफ फेस्टिवल से पहले इंस्टाग्राम अकाउंट पर शॉर्टली बिफोर द शूटिंग, जिसमें उसने डाले थे डिसग्रंटल्ड कैप्शंस। फुटेज जो कि अपलोड की गई है सोशल मीडिया पर में देखा जा सकता है कि फेस्टिवल अटेंडीज स्कैटर हो रहे हैं फियर और कंफ्यूजन के साथ, जबकि लाउड पॉपिंग साउंड्स सुनाई दे रही हैं बैकग्राउंड में। The suspect was armed with an assault type rifle, and as soon as he saw the officers, he engaged the officers and fired at the officers with that rifle. And I had 3 officers that engaged the suspect. And despite the fact that they were outgunned with their handguns against a rifle, those 3 officers were able to fatally wound that suspect, and the event ended very quickly. I can't tell you how proud I am of the officers for being able to engage this guy as quickly as they did, because we had thousands of people there in a very small area. And, it could have gone so much worse, so fast. Children, we talk a lot about the suspect here, but we do have 3 people deceased, confirmed deceased. We have one who was a 6-year-old male victim. We also had a 13-year-old female victim. And then we had another male victim in his 20s. We don't have a motive for the shooting as yet. We did have reports of a potential second suspect. We don't have any confirmation that any second suspect did any shooting, but we certainly are investigating all leads to try to determine who that potential second suspect is and what exactly that person's role was. I know the parents, and very nice, always friendly, and talking to them. I talk to them every time we see them. Just great family. डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंशियल होपफुल एलिजाबेथ वॉरेन ने बताया टाउन हॉल को ओहायो में कि अगर वो इलेक्टेड होती हैं व्हाइट हाउस के लिए तो यूज करेंगी लेवरेज यूनाइटेड स्टेट्स की रेस करने के लिए लेबर और एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स विया ग्लोबल ट्रेड एग्रीमेंट्स। वॉरेन, जो कि सेनेटर हैं फ्रॉम मैसाचुसेट्स, कैंपेन कर रही हैं ओहायो में अहेड ऑफ अ सेकंड राउंड ऑफ बैक टू बैक डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंशियल डिबेट्स जो कि होने वाली हैं इस वीक। एलिजाबेथ वॉरेन ने ऑफर किया है सबसे ज्यादा वॉल्यूमिनस पॉलिसी प्रपोजल्स क्राउडेड डेमोक्रेट के मैदान में, जो कि होप कर रहे हैं चैलेंज करना रिपब्लिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को नवंबर 2020 इलेक्शंस के दौरान। उन्होंने आउटलाइन किया है प्रपोजल्स को जो कि गवर्न करेंगे उनकी इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी को, जिसमें शामिल है रिक्वायरिंग ट्रेड नेगोशिएटर्स डिस्क्लोज करने के लिए ड्राफ्ट न्यू ट्रेड एग्रीमेंट के टू द पब्लिक। जबकि उन्होंने एको किया प्रेसिडेंट का क्रिटिसिज्म प्रीवियस ट्रेड डील्स के लिए जो कि अनफेयर है अमेरिकन वर्कर्स के लिए, मगर कॉल दी है ज्यादा लिबरल पॉलिसीज की इन्फ्यूज करते हुए ट्रेड डील्स को। Before we start negotiating with anyone, we say you got to raise your standards. You got to raise your labor standards. You got to raise your environmental standards. You got to raise your human rights standards. We can't use trade as a way to drive down standards across the world. We need to use the leverage of American markets to drive up standards around the world. This is our moment in American history. This is our chance to get organized, to build a grassroots movement, to persist, and to build the America of our best values. Dream big, fight hard. Accused mastermind September 11, 2001 अटैक्स के ने इंडिकेट किया है अपनी विलिंगनेस चार्जेस हटाने के लिए जब विक्टिम्स सू कर रहे हैं सऊदी अरेबिया को फॉर डैमेजेस अगर यूनाइटेड स्टेट्स डिसाइड करता है कि ना सीक करे डेथ पेनल्टी अगेंस्ट हिम।
खालिद शेख मोहम्मद ने ऑफर किया है एक लेटर के जरिए जिसको फाइल किया गया है यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मैनहट्टन में लॉयर्स की तरफ से जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस को सीक करते हुए बिलियंस ऑफ डॉलर्स डैमेजेस में। जबकि याद रहे कि सऊदी गवर्नमेंट ने काफी समय से डिनाई किया इन्वॉल्वमेंट इन अटैक्स के सिलसिले में, जिसमें हाईजैक किया गया था एयरप्लेन्स को जो कि क्रैश हुए थे न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, पेंटागन, आउटसाइड वॉशिंगटन डीसी और पेंसिल्वेनिया फील्ड में, जिसमें मारे गए थे करीब 3000 लोग। जबकि वॉल स्ट्रीट जर्नल रिपोर्ट किया अर्लियर दिस वीक इस लेटर में के सिलसिले में माइकल कैलॉग जो कि वॉशिंगटन बेस्ड लॉयर हैं सऊदी गवर्नमेंट के, ने डिक्लाइन किए हैं कमेंट करने से। जबकि लेटर के अनुसार प्लेंटिफ के लॉयर्स कांटेक्ट में हैं लॉयर्स के साथ फॉर 5 विटनेसेस जो कि मौजूद हैं फेडरल कस्टडी में अबाउट देयर अवेलेबिलिटी फॉर डिस्पोजिशंस। जबकि लॉयर्स का कहना था कि 3 इंक्लूडिंग मोहम्मद हाउस्ड हैं क्वांटामो बे क्यूबा डिटेंशन कैंप में जहां वो फेस कर रहे हैं कैपिटल चार्जेस, जबकि बाकी के 2 मौजूद हैं सुपरमैक्स मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन फ्लोरेंस कोलोराडो में। और अब आपको लिए चलते हैं छोटे से ब्रेक की तरफ। Idol के दीवाने क्रूज come on board and experience a mesmerizing journey with Manish Paul, Salman Ali, Nitin Kumar, Sachin Valmiki, Neelanjana Ray, Avanti Patel, Vibhor Parashar, Kunal Pandit and Ankush Bharadwaj. Customized halal and Jain food. Call 1-877-600-5998 or visit www.jalbacruise.com. When it comes to protecting yourself and your partners, all the information out there can be overwhelming. Visit our website. We are a free and confidential service striving to help you stay informed and stay notified. We are committed to a healthy Houston. Every day, law enforcement, firefighters, tow operators, and other emergency personnel risk their lives responding to calls for help. The Move Over or Slow Down law requires that you clear the lane closest to responding vehicles or reduce your speed to 20 miles per hour below the posted limit. Following this important law helps prevent crashes and saves lives. The next time you see flashing lights ahead, travel smart and move over or slow down. A road safety message from Houston TransStar. वेलकम बैक। बढ़ते न्यूज की डिटेल्स की तरफ। कनेडियन पुलिस पहुंच गई है टाइनी हैमलेट टाउन नॉर्दर्न मैनिटोबा में जब उनको मिली रिपोर्ट्स के नजर आए हैं 2 टीनेज फ्यूजिटिव्स जो कि वांटेड है मर्डर के लिए 3 लोगों का, जिसमें शामिल है अमेरिकन ऑस्ट्रेलियन टूरिस्ट कपल। कई दिनों से चल रहा है मैनहट्टन 19-year-old कैम मैक्लॉयड और 18-year-old ब्राइस मिस्की का, जिन्होंने क्रॉस किया है हाफ द कंट्री शिफ्ट करते हुए टू द एरिया ऑफ यॉर्क लैंडिंग मैनिटोबा में, जो कि करीब है 1865 माइल्स फ्रॉम द क्राइम सीन्स ब्रिटिश कोलंबिया से। यहां पर याद रहे कि ये पेयर ओरिजिनली रिपोर्ट हुआ था मिसिंग जुलाई 19 को, मगर बाद में उनको डिस्क्राइब किया गया था एज सस्पेक्ट्स किलिंग के लिए अमेरिकन 24-year-old चाइना डेजी और उनके 23-year-old बॉयफ्रेंड ऑस्ट्रेलियन लूकस फाउलर के। जबकि कनेडियन पुलिस चार्ज कर चुकी है इन फ्यूजिटिव्स को लास्ट वीक 2nd डिग्री मर्डर के लिए 64-year-old लेनर्ड डायक के भी, जो कि वैंकूवर का एक बॉटनी प्रोफेसर था। As normal as it was before. Everything's changed here and everybody's on edge. A little stress right now, and their way of life right now has been impacted deeply. They're all inside. We've been to a couple communities. Everyone's indoors. Everyone's scared. Officers searched the York Landing area throughout the night and continue their efforts today. The Royal Canadian Air Force is also assisting today with the search. Our officers are on the ground, have not made contact with the individuals, and so we are not yet in a position to confirm that these are the wanted suspects. Our goal today remains to safely locate, apprehend, and identify the individuals. We understand that this is a trying time for the community of York Landing and that there's a lot of uncertainty. We want to remind residents that we have a lot of police resources in the area and that our priority is their safety. यूनाइटेड नेशंस के एनवॉय ने कॉल दी है ट्रूस डिक्लेयर किया जाए लीबिया में अराउंड अगस्त 10, वार्न करते हुए इन्फ्लक्स ऑफ वेपन्स का जो कि आ रहे हैं फॉरेन सपोर्टर्स की तरफ से और जो कि वायलेशन है आर्म्स एम्बार्गो का, फ्यूल करते हुए इस कॉन्फ्लिक्ट को।
एनवॉय का कहना था ट्रूस डिक्लेयर करना चाहिए मार्क करने के लिए मुस्लिम ईद उल अजहा हॉलिडे। यूएन लिबिया एनवॉय गस्साम सलाम ने बताया ये बात सिक्योरिटी काउंसिल में। उनका कहना था कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मूव्स जैसे कि एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स की जरूरत है और रहने की जरूरत है और टेम्परेरी डिटेन किया जाए। यहां पर याद रहे कि लिबिया राइवन है बाय वायलेंस सिंस द फॉल ऑफ मोहम्मद कद्दाफी 2011 से। और अपने एक स्टेटमेंट में अर्लियर दिस मंथ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने कॉल दी है वार्निंग पार्टीज को कि कमिट करें टू अ सीज फायर और अर्ज किया है दूसरे देशों को कि इंटरवीन ना करें कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाते हुए। यहां पर याद रहे कि सिक्योरिटी काउंसिल स्ट्रगल करता आ रहा है यूनिफाई करने के लिए कि कैसे डील किया जाए रिन्यूड वायलेंस से, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया दोनों ने बता दिया है काउंसिल कोलीग्स को कि वो सपोर्ट नहीं कर सकेंगे रेजोल्यूशन को जिसमें मांगा जा रहा है सीज फायर लीबिया में। I call for a truce to be declared for the Eid al-Adha, which will fall on or about August the 10th. The truce should be accompanied by confidence-building measures between the parties to include the exchange of prisoners, the release of those arbitrarily detained or abducted, and the exchange of mortal remains. In the course of the current fighting, serious violation of international human rights and humanitarian law by all parties have been committed. More than ever, Libyans are now fighting the wars of other countries who appear content to fight to the last Libyan and to see the country entirely destroyed in order to settle their own scores. Armed drones, armored vehicles, pick-up trucks fitted with heavy armaments, machine guns, recoilless rifles, mortar and rocket launchers have been recently transferred to Libya with the complicity and indeed outright support of foreign governments. पाकिस्तानी मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो कि ट्रेनिंग फ्लाइट पर था क्रैश हुआ है बिल्डअप एरिया में पाकिस्तानी गैरिसन सिटी ऑफ रावलपिंडी में आज सुबह, जिसमें मारे गए हैं 5.5 क्रू मेंबर्स और 12 सिविलियंस, जिसके बाद आग लग गई इस पाइल ऑफ स्मोकिंग रबल में। स्टेटमेंट फ्रॉम द पाकिस्तानी मिलिट्री के मुताबिक ये एयरक्राफ्ट अपनी रूटीन ट्रेनिंग फ्लाइट पर था जब क्रैश हुआ, जबकि कोई इमीडिएट वर्ड ऑन द कॉज ऑफ द एक्सीडेंट और टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट इन्वॉल्व नहीं। पाकिस्तानी मिलिट्री और सिविलियन रेस्क्यू वर्कर्स ने पहुंचाया एटलीस्ट 12 इंजर्ड सिविलियंस को हॉस्पिटल और शहर में आग भी बुझाई। ये जहाज गिरा है एज पर एफ्लुएंट हाउसिंग डेवलपमेंट बहरिया टाउन की लोकेशन पर। इसमें कुछ फायर के वजह से बर्न्स के विक्टिम्स हैं और कुछ जो है वो चूंकि बिल्डिंग कोलैप्स हुई है उसकी वजह से भी विक्टिम्स हैं। उसमें हमने कोशिश यही की है कि रावलपिंडी के हॉस्पिटल्स में तीनों जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं टीचिंग हॉस्पिटल्स इनमें शिफ्ट किया जाए। ये एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हुआ है, ये प्लेन यहाँ पे ट्रेनर जो जेट था वो यहाँ पे प्लेन यहाँ पे गिरा है। फौरी तौर पे ऑपरेशन शुरू हो गया, रेस्क्यू का फायर लग गई थी उसको कंट्रोल कर लिया, 2 घंटे लगे हैं सारा ऑपरेशन करने में, बॉडी से सारी रिकवर कर दी है। करीब 700 लोगों को रेस्क्यू किया गया है ट्रेन से जो कि स्ट्रैंडेड थी मूनसून वाटर्स में ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ इंडियाज फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई में। रेलवे ऑफिशियल और लोकल मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि पैसेंजर्स जो कि स्ट्रैंडेड थे महालक्ष्मी एक्सप्रेस ट्रेन में इन बदलापुर रीजन सिंस फ्राइडे नाइट वाटर लॉगिंग ट्रेन में जब होती आ रही है इंसेसेंट रेन जिसने कवर किया था रेलवे ट्रैक्स और पार्शियली सबमर्ज कर दिया था पूरी ट्रेन को, जबकि इंडियन ऑफिशियल जिनका ताल्लुक है सेंट्रल रेलवे चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिस से का कहना था कि सारे पैसेंजर्स को निकाल लिया गया है ट्रेन में से, जिसमें हेल्प की गई है इंडिया की एयरफोर्स, नेवी और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ने भी, जिसमें एनलिस्टेड हैं एड रेस्क्यूअर्स एफर्ट्स भी शामिल हैं। दूसरी तरफ मुंबई में वाटर लॉक्ड रोड्स ने कॉज किया है लॉन्ग ट्रैफिक जैम्स को, जबकि डिलेज देखने में आए हैं रेल जर्नी और फ्लाइट्स में बारिश के कारण। जो मदद मिली वो अभी जो इधर ये लोग दे रहे हैं वही मदद मिली, बाकी कुछ नहीं। मदद तो पहुंच रही थी लेकिन जैसे चालू हुआ सुबह, जैसे सुबह हो गई तो मदद पहुंच रही थी, हम लोग रुके हुए थे, बाकी पहले जा रहे थे। यूनाइटेड स्टेट्स पहुंच गया है टॉप पर पैन एम गेम्स मेडल टेबल तक जब स्वीप किया प्लेयर्स ने 3x3 बास्केटबॉल गोल्ड मेडल्स को, जबकि इंडिकेशंस मौजूद हैं कि अमेरिकन प्लेयर्स लाइकली रहेंगे गेम्स में 2-week शोकेस के। शुरुआत में होस्ट पेरू कामयाब नजर आया जब उन्होंने विन की दोनों मैराथन ब्रीफली टॉप टेबल तक, मगर गोल्ड मेडल जीता संडे को मेक्सिको ने। मगर अब यूएस पावर हाउस ने फ्लेक्स कर लिए हैं अपने कलेक्टिव मसल्स डे 3 पर। यूएस ने सीज किया है कंट्रोल लीडर बोर्ड का 17 गोल्ड और 44 टोटल मेडल्स के साथ इस पैन एम गेम्स में।
एएसएपी रॉकी की मां और उनके लॉयर पहुंच गए हैं स्टॉकहोम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जब रैपर का ट्रायल अंडरवे है। स्वीडन ने डिसमिस किए हैं एंग्री आउटबर्स्ट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी जब स्वीडिश प्रोसिक्यूटर्स ने चार्ज किया यूएस रैपर एएसएपी रॉकी को विद असॉल्ट, कहते हुए कि उनके देश का जुडिशियल सिस्टम इंडिपेंडेंट है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है। बेस्ट नोन फॉर हिज सॉन्ग प्रेज द लॉर्ड, 30-year-old परफॉर्मर, प्रोड्यूसर और मॉडल जिसका रियल नाम भी है रॉकी मेयर्स को डिटेन किया गया था 3 वीक्स पहले जब उसने किया झगड़ा स्ट्रीट पर 2 आदमियों के साथ स्टॉकहोम में ऑन जून 30, जिसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने लास्ट वीक अर्ज किया था स्वीडिश प्राइम मिनिस्टर को कि फ्री कर दें एएसएपी रॉकी को, जिसके बाद फायर ऑफ किए अपने ट्वीट्स में लास्ट वीक कहते हुए कि वो बहुत डिसअपॉइंटेड हैं स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर से और डिमांड किया ट्रीट अमेरिकन फेयरली का। यहां पर याद रहे कि मायर्स यानी कि एएसएपी रॉकी को चार्ज किया गया है विद असॉल्ट और अगर कन्विक्ट हो जाते हैं तो फेस करेगा अप टू 2 years इन जेल, जबकि स्पोक्समैन फॉर द स्वीडिश गवर्नमेंट का कहना था कि उनकी गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होगी इस केस में। जबकि याद रहे कि रॉकी एएसएपी जिसका असल नाम है मायर्स जाना जाता है सूडो नेम लॉर्ड फ्लैको से भी और गया था स्टॉकहोम परफॉर्म करने के लिए स्मैश हिप हॉप फेस्टिवल में। I'm here to show support for Rocky, Thoto and Bloody that are unfairly being charged with assault here in Sweden. And they came to Sweden to entertain us and were harassed by 2 guys that looked like they were on drugs. And Rocky, being from Harlem, did what he did to defend himself. हंड्रेड्स ऑफ वॉलंटियर्स ने हेल्प किया रेस्क्यू करना 5 व्हेल्स को जो कि स्ट्रैंडेड थी फ्लोरिडा बीच पर। लोकल मीडिया के अनुसार कोस्ट गार्ड और क्लियर वाटर मरीन एक्वेरियम ने लीड किए हैं रेस्क्यू एफर्ट्स, जबकि एरियल न्यूज वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे व्हेल्स के लिए शैलो वाटर में टेंट्स लगाकर दिया गया शेड फ्रॉम द सन प्रिवेंट करने के लिए उनको सनबर्न से, जबकि 3 व्हेल्स को लोड करके इनटू बोट्स रिलीज बैक किया गया गल्फ ऑफ मेक्सिको में, जबकि बाकी 2 को ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया गया। आइटम्स हॉलीवुड के बिगेस्ट स्टार्स के सेट हैं हिट करने के लिए ऑक्शन ब्लॉक को। लॉस एंजलिस बेस्ड ऑक्शन हाउस क्रूज GWS ऑक्शन इनकॉर्पोरेशन होस्ट करेगा लाइव ऑक्शन अगस्त 31 को, जिसमें शामिल होंगे आइटम्स एल्विस प्रेस्ले से लेकर मैरिलन मनरो, शैरन टेट फिल्म्स, फॉरेस्ट गंप और लैरी क्राउन के। यह ऑक्शन होगा हार्ड रॉक कैफे हॉलीवुड कैलिफोर्निया में। The Hot Rod from Loving You, the Elvis Presley movie. It was his first starring role. The car has never been offered at auction. It was a one-of-a-kind custom built in 1937. It was actually used for 2 films even before Loving You. So it's a very famous car. It's been Smithsonian twice, the NHRA Museum. ब्रिटिश वोग ने अब रिलीज किया है एक स्नीक पीक और बिहाइंड द सीन्स अपने सितंबर इशू ऑफ द मैगजीन को लेकर, जिसको गेस्ट एडिट किया मेगन मार्कल डचेस ऑफ ससेक्स ने। बकिंगम पैलेस का कल कहना था कि मेगन मार्कल जो कि वाइफ हैं ब्रिटेन के प्रिंस हैरी की ने चूज किया है फीचर करना 15 औरतों को जिनको वो कंसिडर करती हैं फोर्सेस फॉर चेंज कवर पर सितंबर इशू ऑफ ब्रिटिश वोग के, जिसकी वो गेस्ट एडिटर बनी। यहां पर याद है कि डचेस ऑफ ससेक्स ने स्पेन के 7 मंथ्स काम करते हुए ब्रिटिश वोग एडिटर इन चीफ एडवर्ड एमनेल के साथ इस इशू के लिए, और इस सितंबर इशू में उन्होंने फोकस किया है वैल्यूज, कॉजेज और उन औरतों पर जो के काम करती आ रही हैं इम्पैक्ट करना दुनिया भर में। इस कवर ऑफ द मैगजीन अवेलेबल होगा अगस्त 2 तक, जिसमें फीचर किया गया है महिलाओं को, जिसमें शामिल है टीनेज क्लाइमेट चेंज कैंपेनर ग्रीटा थर्नबर्ग, न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर हसिंडा आर्डन, बॉक्सर रामला अली और एक्ट्रेस एंड विमेंस राइट एडवोकेट सलमा हायक पेनॉल्टी। और इस इशू में फीचर किया जा रहा है कैंडिड कन्वर्सेशन बिटवीन मेगन और फॉर्मर यूएस फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा के साथ। Do you think there's a solution to that though, and that's ultimately us coming back to the humanity that we all share. और अब आपको बताते हैं मौसम का हाल। की खबरों में इतना ही और खबरों डिटेल्स के लिए देखते रहिए एनटीवी ह्यूस्टन। मैं हूं सोफिया जमाल।